दोस्तों आपको इसका नाम पता है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप कोई भी मॉडिफिकेशन पावर सप्लाई बैटरी से लेते हैं। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग फ्यूज है। अगर किसी भी रीजन से बैटरी से जो पावर आता है उस पर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो फ्यूज बर्न होकर आपका जो एक्स्ट्रा सर्किट खींचा है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो फ्यूज के बिना आप कभी भी बैटरी से पावर नहीं लीजिएगा। एक फ्यूज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ होगा आपके लिए। देखिए किस तरह से आपको इस फ्यूज को स्ट्रांगली वायर से कनेक्ट करना है, उसे सील करना है, सेफली उसे बैटरी से अटैच करना है और जो वायर है उसका ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग भी आपको ऐड कर देना चाहिए। अगर बैटरी से पावर लेते हैं तो जरूर चाहे एम्पलीफायर हो या किसी और सिस्टम हो उस पर अर्थिंग भी करिएगा, क्योंकि अर्थिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होता है तो डिस्चार्ज होने के लिए एक वे चाहिए। अर्थिंग सेव कर देता है आपका ये जो एक्स्ट्रा सिस्टम को। अगर जो बैटरी से पावर लिया गया है उसका यूज नहीं है, आप एम्पलीफायर या कुछ और नहीं रखते हैं तो डिक्की हो या कहीं पर आपने जो वायर खींचा है उसे कंप्लीटली सील करके ही छोड़िएगा। तो दोस्तों इन चीजों का आप जरूर ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।